Good morning, students. In this video, we will solve exercise 3.3 of class 11th. So, from question 1 to 4, we have to prove these values. And question number 5 is find the value of this one. So, let's start. First, prove this value equals to this one. So, let's start. Answer number 1. First, we have to find out the values of these separately. So, sine square, देखिए, sine square pi by 6. First, find out the value of sine square pi by 6. Then cos square pi by 3. Then find the value of tan square pi by 4. Then put all these value in LHS and solve it. Then we have to prove that those values are equal to RHS. So, sine square pi by 6 can be written as, देखिए, sine square theta, that is equal to sine theta whole square. Okay, sine square, देखिए, sine square theta means you have to write sine theta into sine theta 2 times, and this value is equal to this one. But sine square theta not equal to sine theta square. These two values are different. These two values are different because this question is like this: sine square 30 degree that is not equal to sine 30 स्क्वायर. यहां पे जो sine 30 है उसका स्क्वायर है, जबकि यहां पे दिस इज sine 30 का स्क्वायर मीन्स 900 एंगल. सो दीज टू वैल्यूज आर डिफरेंट. सो पहले कंसेप्ट तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर. दीज two values are different. So sine square pi by 6 can be written as sine pi by 6 and whole square of this. Okay, now pi by 6, since pi by is 180, so pi by 6 means divided by 6, so we get 30 degree. So this value is equal to sine 180 by 6 and square of this, so is equal to sine 30 and square of this, and value of sine 30 is 1 by 2, so square of this we get 1 by 4. Okay, so this is the value of sine square pi by 6, that is 1 by 4. Okay, now come to cos square pi by 3. Similarly, this can be written as cos pi by 3 का whole square equals to cos 180 by 3 and whole square of this equals to cos 60 and whole square of this. Cos 60 is again 1 by 2 and square of this equals to 1 by 4. Now tan square pi by 4. So tan square pi by 4 is equals to tan pi by 4 का whole square means tan pi means 180 by 4 and whole square of this. So we get tan 45 and square of this, and we know that tan pi by 4 value is 1, so square of 1 equals to 1. So these are the values. Okay, so these are the values for this one, or I am writing here. You can write it here equals to tan 45 and square of this, and this is so equals to tan 45 and square of this, and tan 45 is 1, square of 1 equals to 1. Now put these values in LHS. Put all these values in LHS. So LHS becomes sine square pi by 6. So sine square pi by 6 is 1 by 4 plus, okay, cos square pi by 3. Cos square pi by 3 is 1 by 4. Then minus tan square pi by 4. Tan square pi by 4 is 1. So 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1. So take the LCM 4. So 1 plus 1 minus 4. Okay, then we get minus 2 by 4 equals to minus 1 by 2. So this is equals to minus 1 by 2, that is equal to RHS. That is equal to RHS.
So this is the question number first. Now come to question number second, that is now answer number 2, that is sine square 2 sine square, that is 2 sine square pi by 6. So it can be written as 2 into sine pi by 6 and square of this. So 2 into sine pi by 6 means sine pi means 180. So 180 divided by 6 we get 30 degree. So sine 30 का square means this is equal to 2. Sine 30 is 1 by 2. So square of this. So 2 into 1 by 4 equals to we get 1 by 2. Now cosec square. Now cosec square 7 pi by 6. So it can be written as cosec 7 pi by 6 and square of this. So equals to cosec 7 into 180 divided by 6 and whole square of this one. Okay, equals to 6a. If we divide, then we divide 30 times. So it becomes cosec 7 3 are 21, 210 degree and square of this. Now what is the value of cosec 210? So cosec 210 be written as cosec 210. देखिए 210 means 180 and 210. So it becomes 180. 180 में हमें कुछ ऐड करना है. कितना ऐड करें? Then we get 210. So we can write it 2 pi plus 30 degree. Okay, because pi plus 30 degree because pi is 180. So 180 में हम कितना ऐड करें? Then we get 210. So we have to add here 30 degree. So it can be written as cosec 210 can be written as cosec pi plus 30 and whole square of this. So equals to, now this is the case of pi. So cosec हमारा cosec में ही रहेगा. Now angle is 30 degree. Now symbol. So symbol देखिए, the angle 210 comes in third quadrant. This is pi plus 30. So plus means move into forward direction. So we reach in third quadrant and in third quadrant cosec is negative. So ये हमारा नेगेटिव सिंबल एंड स्क्वायर ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू. सो देखिए कोसेक 30 इज 1 अपॉन साइन 30. सो वैल्यू ऑफ दिस इज 2. कोसेक 30 इज 2 एंड दिस इज नेगेटिव सिंबल. सो स्क्वायर ऑफ दिस वी गेट 4. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. नाउ मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर पाई बाय मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर पाई बाय 3. सो नाउ this can be written as cos pi by 3 का whole square. Now cos pi by 3 is pi means 180 divided by 3 means 60 degree. So it becomes cos 60 का square and cos 60 is 1 by 2 and square of this is 1 by 4. So these are the values for the terms we will use in question number second. Now put these values in, put all these values. Now put all these values in question number second, that is, so LHS becomes 2 sine square pi by 6. So 2 sine square pi by 6 means 1 by 2 plus cosec square 7 pi by 6. This is the value of 4 into cos square pi by 3, that is 1 by 4. So हमारा 4 से 4 cancel. Then we get half plus 1, that is 3 by 2, that is equal to RHS. Okay, so this is the solution of question number second. Now come to question number third, that is now third question. Third is cot square pi by 6. So cot square pi by 6 means cot pi by 6 and square of this. So cot, this can be written as cot. Pi means 180. So this can be written as 30 ka square. And we know that cot 30 is root 3. Cot 30 is root 3. So square of root 3 equals to 3. So cot square pi by 6 means root 3. Now cosec 5 pi by 6.
Now cosec 5 pi by 6, so it can be written as cosec 5 into 180 divided by 6, so we divide into 30 times, so it becomes cosec 150. Okay, now cosec 150 can be written as cosec pi minus 30. सो पाई का केस है हमारा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, एंगल 30 डिग्री, और दिस वैल्यू ऑफ दिस 150 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, and in second quadrant cosec is positive, so cosec 30 and value of cosec 30 is 2. Now 3 tan square pi by 6, so 3 tan pi by 6 means 30 degree and square of this, so 3 into value of tan 30 is 1 by root 3 and square of 3, so 3 into 1 by 3 equals to 1. Okay, now put these values in LHS, then we get cot square pi by 6 means 3 plus cosec 5 pi by 6 value 2, then plus value of this tan square pi by 6 is 1, so 3 plus 2 5 plus 1 6, that is equal to RHS. So this is the question number 3rd. Now come for question number 4th, that is now question number 4, that is 2 sine square, so 2 sine square 3 pi by 4, so it can be written as 2 sine 3 into 180 divided by 4 and square of this, so 4 से हमारा डिवाइड होगा कितने टाइम्स 45, so it can be written as 2 sine 135 degree and square of this is 135, so 135 can be written as 2 sine pi minus 45, okay, and square of this. Now देखिए पाई बाई 4 मीन्स 180 by 4, वैल्यू पुट किया हमने, इसको सोल्व किया, देन वी गेट साइन 135, so 135 कैन बी रिटन एज लाइक दिस इज इक्वल टू 2, ये पाई का केस है, सो साइन हमारा साइन में ही रहेगा, एंगल हमारा 45 डिग्री, ये हमारा इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस 45, सो दिस इज पाई माइनस 45, सो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा, एंड स्क्वायर ऑफ दिस, सो 2 into 1 by root 2, 2 sin 45 is 1 by root 2 and square of this, so we get 2 into 1 by 2 equals to 1. Okay, now come for 2 cosec square pi by 4, 2 cos square pi by 4 2, what is the value of cos pi by 4? Pi by 4 means cos 45 degree, okay, square of this equals to 2 into cos 45 is 1 by root 2, so square of this, then 2 into 2 we get again here 1. Now 2 sec square pi by 3, so 2 sec pi by 3 means you can say sec 60 degree and square of this, so 2 into value of sec 60 is 1 upon cos 60, so it can be written as 2, value of sec 60 is 2, so now square of 2, so we get 2 square 4 into 2 8, okay. Now if you put these values LHS, then we get 2 sine square 3 pi by 4, so 2 sine square 3 pi by 4 equals to 1 plus 2 cos square pi by 4, so 2 cos square pi by 4 is 1 plus 2 sec square pi by 3, that is 8, so 8 plus 9 plus 1 we get 10, that is equal to RHS. Okay, so this is for the question number 4. Now come to question number 5. Now fifth question is that find the values of, first is sin 75, so answer number 5, इसमें first part we have to find out value of sin 75 degree. Okay, now we know that 0 degree, we know the value of sin 0 degree, we know the value of 30 degree, sin 30, sin 45, 60 and sin 90.
सो इनके कॉम्बिनेशन से हमें 75 डिग्री को जनरेट करना है. सो इनके कॉम्बिनेशन से वी कैन जनरेट 30 plus 45 equals to 75. So this can be written as sine 30 plus 45. Okay. So this is the combination of sum of two angles. Now since we know the identity sine A plus B equals to sine A cos B plus cos A sin B. So if we compare A as 30 degree and B is 45 degree, okay, A as 30 degree and B as 45 degree, so it can be written as sin 30 plus 45 can be written as sin A. So A is 30 degree, so sin 30, then cos 45 plus cos 30 and sin 45 degree. Okay, now put the values. Sin 30 is 1 by 2, cos 45 is 1 by root 2, plus cos 30 is root 3 by 2, and sin 45 is 1 by root 2. Now it becomes 1 by 2 root 2 plus it becomes root 3 upon 2 root 2. Now take the LCM, that is 2 root 2. So 1 plus root 3. Okay, this is the value of sin 75. If we want to simplify it for आगे और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, then multiply with conjugate. So 1 plus root 3 upon 2 root 2. इसको multiply with the conjugate of this one. So multiply with, you can multiply with 2 root 2 upon 2 root 2. So it becomes, or you can multiply with 2 only. root 2 को आप अगर हटाना चाहें then आप you can multiply with root 2 only. So it becomes, देखिए 1 into root 2, so root 2 plus root 3 into root 2, so we get root 6 upon root 2 into root 2, 2 into 2, so 4. So this can be written as, so this answer is correct for this value. और आप अगर आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. सो हमारा जो आंसर है वो यही फिनिश हो जाता है. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री. ओके, नाउ कम फॉर सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15. सो इसी में सेकंड पार्ट इसी में tan 15 डिग्री. सो tan 15 कैन बी रिटन एज tan 45 minus 30, because 45 minus 30 equals to 15 degree, and this is tan, we know that tan A minus B equals to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. So put these values. If we compare, A is 45 and B is 30, so tan 45 minus 30 can be written as tan 45 minus tan 30 upon 1 plus tan 45 and tan 30. Now solve this. Tan 45 is 1 minus tan 30 is 1 by root 2 upon 1 plus tan 45 1 into 1 upon root 3. So here root 3 becomes LCM, so it becomes root 3 minus 1 upon, यहाँ भी हमारे पास root 3 LCM होगा, then root 3 plus 1, ये हमारा कैंसिल आउट, देन वी गेट root 3 minus 1 अपॉन root 3 plus 1. ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन. अगर आप इसको आगे सोल्व करें देन जो डेनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट से मीन्स root 3 minus 1 और root 3 minus 1 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें then root 3 minus 1 it can be written as root 3 minus 1 का whole square upon a plus b and a minus b. So it becomes a square minus b square. Okay, so it can be written as root 3 minus 1 का whole square. So a square means 3 plus b square means 1 minus 2ab means 2 root 3 upon root 3 का square 3 minus 1 का square 1. So 3 plus 1 4 minus 2 root 3 upon 3 minus 1 2. So if we take 2 common, okay, if we take 2 common from here, then we get 2 common लेने पे we get 2 minus root 3 upon 2. So ये हमारा cancel out. So the result is 2 minus root 3. This is the value of
10, 15. So in this way we can simplify or we can find out the values for various trigonometric angles. So these are from question 1 to 5. Now let's continue with some other questions. The next question, question number 6 is, we have to prove cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, minus sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y equals to this one. So आंसर नंबर 6, इसमें क्या करें, लेट, देखिए वी नो दैट कोस के साथ यहां कुछ भी हो दैट इज एंगल, ओके, दैट इज एंगल. सो इसमें मैं क्या करूं, लेट दैट पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू ए एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू बी, ओके. देन LHS becomes cos, this is pi by 4 minus x, pi by 4 minus x equals to a, so cos a, then cos pi by 4 minus y is equals to b, so b, minus sin pi by 4 minus x, that is a, and sin pi by 4 minus y equals to b. So LHS can be written as like this, cos a cos b minus sin a sin b, and we know that cos a cos b minus sin a sin b equals to cos a plus b. So it can be written as cos, what is the value of a, put the value of a is pi by 4 minus x, then plus b, what is the b is pi by 4 minus y, okay. First of all, let pi by 4 minus x equals to a and pi by 4 minus y equals to b. So it becomes cos a cos b minus sin a and sin b. So this is the identity equal to cos a plus b. Now put the values of a and b again from here, pi by 4 minus x and b is pi by 4 minus y. So it can be written as cos pi by 4 plus pi by 4 means pi by 2 minus x minus y, okay. So it can be written as cos pi by 2 minus, take minus as common, so we get, okay. So this is equal to, this is similar to like this, cos pi by 2 minus theta, okay. This is similar to cos pi by 2 minus theta. So cos, देखिए cos pi by 2 minus and this is as a theta. So value of this is pi by 2 का केस है, cos हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, एंगल हमारा थीटा, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट pi by 2 minus theta, this is pi by 2 minus theta. So again backward direction, so in first quadrant, and in first quadrant cos is positive, so it becomes sin theta. So it can be written as sin, यहाँ पे अगर हम देखें थीटा की जगह है that is x plus y. So this is equal to RHS. Okay, this is equal to RHS. This is the solution of first question number 6. Now come for question number 7. Now come for question number 7, that is question number 7. Tan pi by 4 plus x. So first solve this tan pi by 4 plus x. First of all solve this tan pi by 4 plus x, okay. So we know that tan a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a and tan b, okay. Now put the values of here, tan pi by 4 means 1 minus tan x upon 1 plus 1 minus, then tan pi by 4 is 1, so 1 into tan x, okay. So it becomes, you can write here 1 plus tan x upon 1 minus tan x. This is the value of tan pi by 4 plus x. Now tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हम डेनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो tan a माइनस बी, सेम tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a and tan b. When we solve these, we find the value 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Okay. So now LHS can be written as LHS is tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x. Now put the values. Tan pi by 4 plus x, that is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Okay. डिवाइड बाय दिस, सो डिवाइड है, सो हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू न्यूमिनेटर हमारा डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, न्यूमिनेटर में. ओके, पुट दीज वैल्यूज हियर. सो देखिए 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस टेन एक्स एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. सो यही हमें प्रूव करना था. सो दिस इज इक्वल टू RHS. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड cos pi plus x. So first of all find cos pi plus x. This is the case of pi. So cos हमारा cos में ही रहेगा, x angle, और it becomes in third quadrant. It pi plus x exist in third quadrant. देखिए because यहां से हम initial line से start करें. This is pi, then plus x. So plus x means movement into forward direction. So we reach in third quadrant, and in third quadrant cos is negative. So this is minus cos x. Now cos minus x, so cos minus x equals to cos x, because we know that cos minus theta equals to cos theta. Okay, so cos minus x equals to cos x. Now sin pi minus x, so this is the case of pi, so sin हमारा sin में ही, angle x, and this is second quadrant, and in second quadrant sin is positive, so sin x. Now come for this value cos pi by 2 plus x. So this is the case of pi by 2. So cos will convert into sin. Angle is x, and this is pi by 2 plus x second quadrant, and in second quadrant cos is, देखिए pi by 2 plus x. This is pi by 2 plus x means this one second quadrant, and in second quadrant cos is negative. So हमारा यहाँ negative. So ये हमने चारों वैल्यू कैलकुलेट कर ली. Now put these values in LHS. So LHS can be written as cos pi plus x. So cos pi plus x is minus cos x into cos minus x, so that is equal to cos x upon sin pi minus x, that is equal to sin x into cos pi by 2 plus x, that is equal to minus sin x. Okay, so हमारा ऊपर तो रहा माइनस cos स्क्वायर x, देखिए माइनस और cos x into cos x cos स्क्वायर x, यहाँ डेनोमिनेटर में माइनस एंड sin x into sin x becomes sin square x. Minus minus cancel out. Now we know that cos upon sin equals to cot, so it can be written as cot x, and square of both, so it can be written as cot square x. यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. So this is the question number 8. Okay, so हमारा जो क्वेश्चन 1 to 8 जो है वो कंप्लीट हुआ. Now let's continue for some other questions. Now the question number 9 is cos 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x, cot 3 pi by 2 minus x, and plus cot 2 pi plus x equals to 1. So let's start. First solve this. देखिए हमारा सेम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 pi by 2 plus x, यहाँ 3 pi by 2 minus x, 2 pi plus x. So ये दोनों सेम है, बट ये एंगल्स हमारे सेम नहीं है. तो क्या करें, इनको सेपरेटली हम सोल्व करें. cos 3 pi by 2 plus x. सो दिस इज द केस ऑफ pi by 2. सो देखिए
पाई बाई 2 का केस है, ओड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, सो कोस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, एंगल इज एक्स। नाउ क्वाड्रेंट देखेंगे 3 पाई बाई 2, सो 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, so this is 3 pi by 2 plus x, so plus x means in forward direction, so हम पहुंच गए कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस इज पॉजिटिव, सो ये हमारा इक्वल टू होगा साइन x के। नाउ कम फॉर दिस वैल्यू कोस 2 पाई प्लस एक्स, सो यहां हमारा पाई का केस है, सो कोस हमारा कोस में ही रहेगा, एंगल इज एक्स एंड 2 पाई प्लस एक्स, सो देखिए दिस इज 1 पाई, दिस इज 2 पाई एंड प्लस एक्स, सो हम आगे कहा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सो इट बिकम्स कोस एक्स। ओके, नाउ फॉर दिस वन कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, सो सेम हमारा कोट पाई बाई 2 का केस है, देखिए पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, सो कोट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें tan में, और 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखिए 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड माइनस मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन हम आ गए इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड कोट आर पॉजिटिव, सो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, नाउ द वैल्यू इज फोर्थ इज कोट 2 पाई प्लस एक्स, सो 2 पाई का केस है, पाई का केस, सो कोट हमारा कोट में ही, एंगल एक्स एंड 2 पाई प्लस एक्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट होगा हमारा पॉजिटिव। सो हमने LHS की सारी वैल्यूज को सोल्व कर लिया। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन LHS, सो LHS बिकम्स, देखिए cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, सो इंटू दिस, सो दिस इज इक्वल टू cos एक्स, देन इनटू ब्रैकेट, सो ये हमारा ब्रैकेट हुआ। नाउ कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू tan x, देन प्लस this value and this is equal to cot x. Okay, so now this value can be written as equal to sin x cos x, and tan can be written as sin x upon cos x, plus cot can be written as cos x upon sin x. Okay, so now this can be written as sin x cos x, देखिए ये हमारा as it is। now अगर हम इनको सोल्व करें, then we get LCM cos x sin x, LCM is sin x and cos x, LCM of these। now cos से cos cancel out, हमारा रहा sin x multiply with sin x, so we get sin square x। okay, then plus, so plus, now sin x और sin x cancel out, हमारा रहा cos x multiply with cos x, so it becomes cos square x। okay, so equals to sin x cos x हमारा cancel out, and we get here sin square x plus cos square x, and we know that this is, and we know, okay, देखिए ये और ये हमारा कैंसिल आउट, हमारे पास रहा sin square x plus cos square x, and we know that this value is equal to 1, so this is equal to RHS। so ये हमारा हुआ जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा कंप्लीट। नाउ कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, so for question number 10, for 10th क्वेश्चन देखिए n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 एक्स हमारे पास सेम है, n प्लस 2 एक्स, n प्लस 2 एक्स सेम है। सो फॉर 10th क्वेश्चन सेम हमने जो पहले किया था, लेट n प्लस 1 इंटू एक्स को मैंने a अज्यूम कर लिया, एंड जो n प्लस 2 इंटू एक्स है इसे मैंने अज्यूम कर लिया b। सो LHS कैन बी रिटन एज साइन, दिस इज इक्वल टू a, सो साइन a, एंड साइन दिस इज इक्वल टू b, प्लस दिस इज इक्वल टू a, सो cos a एंड cos b। ओके, सो साइन a साइन b प्लस cos a cos b, सो यू कैन रिटन एज cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। इस वैल्यू को हमने पहले लिखा, इस वैल्यू को बाद में लिखा। सो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, वी नो दैट कोस ए माइनस बी, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज कोस, व्हाट इज ए इज दिस वन, सो n प्लस 1 इंटू एक्स
minus b, so this is negative symbol b. B is n plus 2 into x. Okay, now solve this value, so we get cos nx, देखिए n into x, so nx, plus 1 into x, so plus x, then minus n into x, so minus nx, and minus 2x. Okay, plus nx and plus minus nx cancel out, so this is equal to cos x minus 2x, so minus x. Okay, and we know that cos minus x, we know that cos minus x is equal to cos x, because cos minus theta equals to cos theta. ओके, क्योंकि कोस और सेक पे जो माइनस है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. अगर हमारे पास ये साइन होता, साइन माइनस थीटा, तो ये हमारा कन्वर्ट होता माइनस थीटा में. सो कोस और सेक के अलावा अगर नेगेटिव है सो वो तो बाहर आ जाएगा, और कोस और सेक में नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो इट बिकम्स कोस एक्स. सो दिस इज इक्वल टू RHS. ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है. सो इस तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने आज की इस वीडियो में फिनिश किए हैं. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 के उनको सोल्व करेंगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.